left. Okay, so first of all, what she did, she wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter. So you have a circular pipe like this, and she wrapped a cord around it. The radius of this circular pipe is 4 centimeter. Okay. Then cut off the length required of the cord. So how you will find that how much cord will be cut off? That will be the circumference of this. Circumference of circle. Okay, so that will be circumference of this circle with this radius. So circumference of circle will be equal to 2 pi r. So it is equal to 2 pi into 4. Okay. So you can take this as 3.14. Okay. So it is equal to 2 into 3.14 into 4. So how much it is coming? मृगांक एरिया नहीं बताना है, पहले इसका सर्कमफेरेंस बताओ आप मुझे पाइप का. हाउ मच इट इज कमिंग? 8 into 3.14. हरी अप. 25.12. 25.12. Okay. 25.12. 25.12 centimeter. Okay, now the same cord is wrapped around a square of side. What is the side of the square? Square box of side 4 centimeter. Now, ये cord तो आपने cut कर लिया, है ना? So now this cord is wrapped around a square of side 4 centimeter. ठीक है? Then you have to check whether this cord will be left, है ना, या ज्यादा लगने वाली है. ठीक है? So for that you have to find the, क्या निकालने वाले हैं? Circumference of square. Yes, ma'am. Yes. Perimeter. हाँ, perimeter. ठीक है, तो हम लोग perimeter निकालते हैं. So perimeter of this square will be 4 into 5. perimeter of square will be 4 into side. So that is equal to 16. ठीक है, तो किसका पेरीमीटर ज्यादा हो गया? सर्कल का. Yes, है ना? ma'am. Circle. Yes, ma'am. तो मान लो सर्कल से हमें इतना कॉर्ड मिला था, एंड इफ यू स्टार्ट रैपिंग इट अराउंड दिस स्क्वायर, सो इट विल बी लेफ्ट ना, है ना? कॉर्ड बचेगा आपका जो आपने स्क्वायर के पेरीमीटर सर्कमफेरेंस से निकाला है. सो दिस मच कॉर्ड विल बी लेफ्ट. फॉर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द पेरीमीटर ऑफ दीज टू. ओके, सो फाइंड. So chord left will be equal to 25.12 minus 16. कितना आ रहा है? Okay, I can see so many answers. Okay, Anushka. 9.12. Rehan, Mrigank. 9.12. Yes, correct. So it is 90 meter. Okay. Shabash. ठीक है. So did you get this point? Clear हो गया सबको? See, all these are word problems. आपको उसे पढ़कर पहले अंडरस्टैंड करना है कि what they are asking and what is given to you. ठीक है? So whatever is given, you write first, है ना? Then which formula you are going to use, that also you can write. Okay, because all these word problems will be long answer type, है ना? ठीक है? Okay, now come to the next question. The adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. Now let us draw this.
All of you, draw this figure in your notebook. Yes. So you have a rectangular lawn. This is question number 9. One rectangular lawn is given to you, and in between there is a circular flower bed. So it is 10 centimeter, no, it is in meter, and 5 meter, and inside this there is a flower bed of radius, circular flower bed of radius 2 meter. Okay, now let us solve one by one. First, of the whole land. So this whole land is, Ananya, where is your attention? This is question number 9. We have just completed question number 8. Question number. This is 9th question, beta. So find the area of whole land, as this whole land is a rectangle. So area of this whole land will be, whole land किस form में है? It is in the form of a rectangle, okay? And area of rectangle, all of you know, is equal to L into B. 5 multiplied by 10 is equal to 50. So it is equal to 5 into 10, 50 meter square. 50 meters square. Okay, correct. Now see next part. The area of the flower bed. Area of the flower bed. So this flower bed is in the form of a circle, है ना? तो कितना हो जाएगा इसका एरिया? So area of flower bed is equal to pi r square, because it is in the shape of a circle. So it is equal to pi into 2 square, that is 4 into 3.14. Yes. So it is 12.56. Okay, very good. Taslima, Astha, Prakriti, correct. Taslima, ये क्या लिख दिया एक और आंसर? 12.57. Okay, correct. ईशानी, टिया, विधान, सोनाक्षी, नहीं सोनाक्षी नहीं है. मैम 12.57 आएगा. हाँ, मैम 12.57 आएगा. 57 आएगा कैसे? Yes मैम. 57. क्यों आ रहा है? यही तो मैं पूछ रही हूँ. मृगांक, how you are getting 12.57 बेटा? See, you can clearly see कि 3.14 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 तो 16 ही आएगा ना बेटा. तो 12.56 ही आएगा बेटा, है ना? वो तो आ ही नहीं सकता 12.57 तो. ओके, सो इट इज 12.56 मीटर. मैम हमने 22.7 से किया था. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक. So now let us see the next part. The area of lawn excluding the area of the flower bed. So third part is area of lawn excluding the area of flower bed. The area of flower bed means you have to subtract the area of circle from the area of rectangle. Okay. So it is equal to 50 minus 12.56. कितना आ रहा है? Okay, is it correct? Iti has answered. Astha. 37.34 meters square. हाँ, सबका आ रहा है. Okay. So it is 37.44, है ना? 37.43. Okay. मैम 22/7 से करें तो 37.43 आ रहा है. अच्छा, हाँ, थोड़ा पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
Now see the next, the circumference of the flower bed. So flower bed is in the form of a circle. So its circumference. 12.57. Okay. Let us see. Circumference of flower bed is equal to 2 pi r, and that is equal to 2 into 3.14 into 2. ठीक है? 12.56 सेंटीमीटर. अच्छा, ये तो सेम ही हो गया. 12.57. एरिया में भी वही था. ओके. So I think this question is clear to you. Clear हो गया? One by one, each part you have to solve, है ना? धीरे धीरे. Now come to the next question. Any doubt in this question? Is it clear to everybody? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now see next question. Question number 10. First of all, let me draw this figure on the board. Then only you will understand, है ना? ठीक है? एक मिनट में ड्रॉ करती हूँ पहले. You also draw this figure in your notebook. Ma'am, this exercise I have already done. Yes, beta? I have already done this exercise. अच्छा, अच्छी बात है. Very good. So the figure is like this, that you have a rectangle like this, okay? And then it is extending from here, then here, okay? And you are required to find the area of this shaded region, okay? अच्छा क्वेश्चन है ये. So it is A, B, C, D, and the measurements are 6, 4, 10, 8, and 18. कितना मेजर है वाला? मेरे बुक में क्लियर नहीं है. What about 10, BC 10. 10 centimeter. ठीक है. So now you are required to find the area of this shaded region, है ना? But मैम जहाँ पे आपने yes बेटा, क्या हो गया? कुछ मेजरमेंट गलत लिया है क्या? मैम जहाँ पे 6 और 4 अलग अलग किया वहाँ पे भी एक आएगा. क्या आएगा बेटा? पॉइंट. हाँ, E F, F, F. हाँ पॉइंट F है. ओके, है ना? So now first of all, understand this question. See, we are required to find the area of this shaded portion, है ना? But ये shaded portion किसी ऐसे शेप में नहीं है. जैसे ट्राइंगल होता तो डायरेक्टली हम होल फिगर का निकाल लेते, है ना? मैम 10 और 8 के बीच में भी E आएगा. ओके बेटा, दैट वी विल सी, है ना? जब हम सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे उसे. Okay, so if we want to find the area of this region, we will first find the area of this whole rectangular figure and then subtract from this area of this triangle and area of this triangle, that is triangle AEF and EBC. This both this triangle we will subtract. So area of this figure 1 and figure 2 we have to find, and also the area of rectangle. ठीक है? So first of all, let us find the area of rectangle ABCD. Okay? क्या पैरामीटर्स है इसके? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 10 into 18. So it is
equal to L into B, that is equal to 180 is in centimeter or meter? Centimeter. Centimeter. So that will be centimeter square. Now find the area of triangle AEF. Okay, so it is actually right angled at this point A also, है ना? Because rectangle है ये तो. Okay, so that will be 30 centimeter square. into base into height. Ma'am, 30 centimeter square. Okay, okay. So it is half into base is 6 and height is 10. Okay, so that is equal to 30. Okay. Now come to area of. Ma'am, 40 centimeter square. हाँ बेटा 30 centimeter square. Now area of Ma'am, triangle 40 centimeter square. Ma'am, EBC. figure 2 का 40 centimeter square. Okay, so it is equal to half into 10 into 8. So it is equal to 40 centimeter square. Okay. So required area will be what? 110 centimeter square. Okay, area of required portion will be equal to, नीचे लिख लेते हैं, this all you have to write है ना, area of rectangle minus area of Ma'am, 110 centimeter square. 1 plus area of 110 centimeter square. Okay. So it is equal to 180 minus 40 plus 30. So it is equal to 110 centimeter square. Okay. Correct? Yes, ma'am. कर लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. ओके, फटाफट नोट डाउन कर लो जल्दी से. मैम, आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? 40 प्लस 30. अच्छा, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ये जो अपन ने फर्स्ट लिया था ना, प्लस एरिया ऑफ सेकेंड. अच्छा एक मिनट ठीक कर दे. आप वैसे भी ले सकते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका नेम देकर, है ना. मैंने तो डायरेक्टली एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड कर दिया है. ठीक है, यू कैन राइट द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल ऑल्सो, मीन्स एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल AEF plus area of second triangle, that is EBC, है ना. That also you can write. Okay. So shall we proceed to the next question? Yes, ma'am. Okay. Now let us see next figure also. You have to draw. All of you draw this figure in your notebook. Yes, it is like this. In this you have a square, है ना. एक square है आपके पास में, with each side equal to 20 centimeter, है ना. With each side equal to 20 centimeter, and then you have like this and this and this. Okay. Now let us name this P, Q, R and S. In between you have T and U. Okay. And these are 10, 10. I think this was the middle point. ये mid point ही था इसका, है ना. Okay. This was the midpoint of this, है ना. Okay. So it will meet here. So this is also 10 and this is also 10. And this also was in the middle. So both this also 10. Okay.
Now you have to find the area of this shaded region again. So tell me now what you have to do. वही है Area of triangle. Ma'am, first find the area of square and then the three triangles. then three triangles, है ना? Same way as we did in the previous question. Area of these three triangles, PQT, है ना? QUR and STU. Okay? So these three triangles you find. जब तक मैं आपकी attendance ले लेती हूँ. Okay? फिर solve करेंगे तो आप लोग बताना. Okay? Let me take your attendance first. Ma'am, done. इतनी जल्दी हो गया? मैम ये कैसा क्वेश्चन है? अभी वेट करना जब तक अटेंडेंस लेती हूँ. सो टुडे इज 20th ना? Done. अभी सब लोग नहीं बताएंगे डन डन करके? ओके. 7th A, रोल नंबर 1 आस्था, अदिति, अनन्या, Present, ma'am. अंगना, Present, ma'am. दिव्या, Present, ma'am. इति, Present, ma'am. अंशिका, हेतल, Present, ma'am. हिमांशी, ईशानी, Present, ma'am. कीर्ति, Present, ma'am. प्रकृति, Present, ma'am. प्रियंका, रश्मि, रुचि, Ma'am, present. हाँ बेटा लगा दिया. शगुन, शिवरंजनी, तस्लिमा, Present, ma'am. वर्षा, आदित्य, आदित्य कुमार. Singh 119 is present. ओके बेटा. देन आदित्य सिंह. Aditya Singh 119 is present. अच्छा, और वो 22 वाला आदित्य सिंह. हाँ करेक्ट. Present. अर्नव, Present, ma'am. ओके. देन आर्यवर्धन, Present, ma'am. अस्तित्व, Present, ma'am. दर्श, Present, ma'am. एकांश, Ekansh Mangal, present, ma'am. कौस्तुभ, Present, ma'am. लक्ष्य गोचर, मृगांक, निशांत, Present, ma'am. मृगांक, Ma'am, Nishan Sharma. Ma'am, हाँ, निशांत लगा दिया बेटा. पीयूष अहीर, Present, ma'am. पीयूष धाकड़, Present, ma'am. पीयूष शर्मा, present, ma'am. प्रनील, Present, ma'am. पृथ्वीराज, Present, ma'am. राजवंश, सौरिश, Present, ma'am. विशाल, अंशिका, ओके विशाल, अनुष्का, दीपश्री, Present, ma'am. गौरी, खुशी, Present, ma'am. खुशी ट्राई टू बी रेगुलर. एक दिन आते हो फिर गायब हो जाते हो. मिरल, Present, ma'am. रितिका, Present, ma'am. पलक, Present, ma'am. पूर्वी जैन, Present, ma'am. पूर्वी वधवा, Present, ma'am. संस्कृति, Present, ma'am. शुमाइला, Present, ma'am. सोनाक्षी, Present, ma'am. सोनाक्षी आई है.
Okay. Yes, ma'am. Suruchi, Ria, Present, ma'am. Yashwini, Ajmeet, Present, ma'am. Ashirwad, Present, ma'am. Bhagyaraj, Bhaskar Kohli, Present, ma'am. Divyansh Gupta, Himanshu, Irish, Irish Jaguar present, ma'am. okay. Lakshya, Mahi, Ma'am, Bhagyaraj Adi present, ma'am. Present ma'am. Ma'am. माही हमेशा गायब हो जाते हैं इधर उधर, फिर बाद में बोलते हो. निकोलस, राघव, Present, ma'am. रजत, समन्यु, विधान, Present, ma'am. ओके. मैम आपने भाग्यराज की लगा दी क्या? हाँ बेटा लगा दी, मैम अनुष्का सिंह की लगा दी मैम बेटा, मृगांक रावत। सब लगा दिए बेटा, अब नहीं पूछना अलग अलग. चलो, so let us complete this question. So area of this first figure, area of triangle PQT, okay, it will be equal to half into 10 into Multiplied by 20. 20, okay, so that is equal to 100 centimeter square. 100 centimeters. If I write first second triangle, it is not correct. that is also correct, no problem with that, okay, you can write. So it is 100 centimeter square, then area of second figure लिख सकते हैं, कोई problem नहीं है ना? So it is equal to half into Centimeter square. second कौन 50 सा? centimeters square. 10 into 10 है ना? 100 centimeters square. 50 centimeters 50 centimeter centimeter square. That will be 50 ना बेटा? 50 centimeter. हाँ, it is 50 centimeter square. Then area of third figure, Ma'am, it is same as the area of हाँ, first that figure. Centimeter square. means आपका है ये triangle 100 centimeter square. QUR है ना? So it is half into 10 into 20. This is same as the first one. So it is 100 centimeter square. Now we have to find the area of this square also. 400 centimeter square. Okay, correct. 150 centimeter square. Area of square PQRS is equal to 20 into 20. So that is equal to 400 centimeter square. And at last, area of the shaded portion is equal to, Ma'am, 150 centimeter square. okay, 400 minus 100 plus 100 plus 50. But you write this in whole language, है ना? That area of this triangle plus area of this triangle plus area of this triangle, है ना? 400 minus area of this, okay? So it is 400 minus 250, that is equal to 150 centimeter square, okay? So I think now this type of questions are very clear in your mind, how to solve such questions. In this questions, figure will be given to you, ठीक है? और उस figure से देख के आपको निकालना है, okay? Now see the last question. This is the last one, na? Okay. Find the area of the quadrilateral ABCD. In this, you are given some measurements and then you have to find the area of this whole quadrilateral. ठीक है?
तो अब देखो इसमें क्या क्या दिया है आपको. Ma'am, यस, ma'am, there is a mistake in question. देयर इज ए Ma'am, mistake. इन व्हाट बेटा? Ma'am, in question. क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है? मैम 66 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज द मिस्टेक? मुझे तो नहीं दिख Ma'am, रहा. how PM is perpendicular to AC? हाउ BM is perpendicular to AC? Yes, ma'am. It is perpendicular ना बेटा? सही तो है. एंगल भी दिखा रखा उन्होंने आपको 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ही हुआ ना बेटा. करेक्ट है क्वेश्चन तो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें. Why you are confused? Okay, ma'am. आपको क्या लग रहा है बेटा? बताओ कि ये परपेंडिकुलर नहीं है. देखो मैं बताती हूँ आपको फिगर बना के, है ना. सो इट इज लाइक दिस. ठीक है. Then you have a diagonal from here to here, and this is A, B, C, D. Okay. Now a perpendicular is dropped from here to here. Yes, it is a perpendicular, and then from this point to this point also. You can see it is a perpendicular. Okay. And these are named as N and M, and the parameters given to you are AC is equal to 22. This whole AC is equal to 22. BM is equal to 3. This BM is 3, and DN is also equal to 3. And yes, perpendicularity दे रखी है. How you will find the area of this quadrilateral? Will be area of this triangle. कौन कौन से Triangles. हाँ? Area of triangle ABC plus area of triangle ADC. Okay, very good. Correct. So that will be area of triangle ABC plus ACD. है ना? And in this base is common, and the length of this AC, that is the base, is 22. Only the difference is there in the length of this altitudes. है ना? एक में 3 है, एक में 2 है. नहीं, दोनों में 3 है. दोनों में 3 है तो आप दोनों में ट्वाइस भी करके निकाल सकते हैं फिर तो, है ना. ओके. मैम 33 33. Okay. So area of triangle ABC and area of triangle क्या है? ACD. Ma'am, 66 centimeter square area of quadrilateral. Okay. So it is half into 22 into 3. So that is equal to 33 centimeter square, and this also will be equal to 33 centimeter square. So required area of quadrilateral. 66 centimeter square. Yes, very good. Is equal to area of triangle 66 centimeters. ABC plus ACD. So it is equal to 33 plus 33, 66 centimeter square. Okay. So I think you all have. Done, ma'am. Okay, very good. Deepshri, Ananya, Taslima, correct. Pranil, okay, good. Angana, Nitika, Ananya, Shani, Aditya, Irish, Tia, okay. मैम सीधे भी कर सकते हैं 22 multiplied by 3. ये कल I am not getting your point, beta.
22 by multiplied by 3. 22 multiplied by 3. सीधे भी तो हो सकता था 66 हो सकता सेंटीमीटर है ना, but you have to show na. Method is also important, that we can see that both the figures are same with the same parameters, है ना? Yes, Ananya, I will be giving this chapter as assignment, so you keep it completed. Okay. Very soon I will be asking for this work in Google Classroom. Okay. Then tomorrow we will start the next algebraic expression only. अभी geometry वाला portion हम थोड़ा बाद में ही करते हैं, ठीक है? एक बार इसी को complete कर लेते हैं, ठीक है? So you come prepared, थोड़ा सा पढ़कर आएंगे algebraic expressions को, है ना? ठीक है? मैम आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो बेटा। मैम वैसे वो पढ़ाई से तो नहीं है, पर मैम एक चीज पूछनी है कि आपने जो काम दिया था ना, तो आप वो चेक हाफ ईयरली के बाद वाला करोगे? तो हाफिली के बाद वाला ही करेंगे बेटा अब तो, है ना? अच्छा ओके मैम। टर्म का क्योंकि मैम मुझसे पहले वाला मेरा थोड़ा कंप्लीट नहीं है, कम है। देखा है मैंने तुम्हारा। अच्छा भास्कर है ये, हाँ। तुम्हारा नहीं है, रजत का भी बहुत सारा काम कंप्लीट नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब बच्चे जमा कर रहे हैं। ओके, तो अब सारा काम कंप्लीट करना बेटा, ठीक है? मैम जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो आप हमारा असाइनमेंट वर्क देखेंगी, जो भी आपने असाइनमेंट किया था। वो तो कंप्लीट करके रखना है ना बेटा। यस मैम, मैंने कंप्लीटेड है, बट एक्सरसाइजेस कहाँ कहाँ पे थोड़ी थोड़ी। अभी से टेंशन हो गई सारी। मैम पर असाइनमेंट मैंने मैम प्रिपेयर मेरा तो किया। कंप्लीटेड है। हाँ बेटा देखेंगे, अभी स्कूल खुलना है तो उसके बाद में, ठीक है? आप लोग अपना काम कंप्लीट रखो बस। ओके मैम मेरा कंप्लीटेड है वर्क। हाँ, अभी और बात नहीं। मैम मैं जो असाइनमेंट किया था वो मैंने बड़े पेपर पे किए थे, नोटबुक पे नहीं किए थे। No problem, it is somewhere na. So if I will ask you about that assignment, you can bring and show it to me na. After your मैम दिखा दोगे ना? हाँ बस वही जरूरी है, ठीक है? यस मैम। मैम एक बड़ी सी नोटबुक में पड़ा है। हाँ, just keep it completed. समझ में आया? अभी कोई आइडिया नहीं है बेटा कब खोलेंगे? ऐसा क्यों भास्कर? डर से भी ज्यादा कुछ लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? मैम मेरे को तो चाहिए कि स्कूल खुल जाए। मैम क्योंकि थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा वर्क के लिए कोई बात नहीं बेटा, दिखा देना वर्क तो, है ना? ठीक है, चलो अभी वाइंड अप करें। यू हैव नेक्स्ट क्लास ऑल्सो ना, ठीक है? बाय मैम। ओके, बाय बाय। तो मैम बाय मैम। 1 फरवरी से खुल रहा है स्कूल। अभी कुछ पता नहीं है बेटा, as soon as it will be decided we will let you know. ओके चलो ठीक है। ओके मैम, बाय। मैम आपने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करी है। हाँ वही कर रही हूँ बेटा, हो ही नहीं रहा जिसको। सब याद दिलाते हो तुम लोग मुझे।